हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। दिस इज सागर बट। इस वीडियो में एज यूजुअल पहले हम इंडेक्स एनालाइज करेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है या नहीं, एंड देन आई विल बी शेयरिंग विद यू टू स्टॉक्स दैट यू कैन लुक फॉर ट्रेडिंग इन द कमिंग वीक। स्टार्टिंग आवर एनालिसिस विद निफ्टी, आप देख सकते हो इन द वीकली टाइम फ्रेम हाउ निफ्टी हैज ब्यूटीफुली बाउंस्ड बैक फ्रॉम द 100 मूविंग एवरेज विच इज इट्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो जस्ट बाय लुकिंग एट निफ्टी हम ये चीज कह सकते हैं कि नाउ इज नॉट ए वेरी गुड टाइम टू एंटर, राइट? So if you had entered at this place, so this is where I have entered and most of my community members have entered. So if you had entered here, either you can book profits now or you can hold it until to the all time highs, or you can hold it for some time, but this is definitely not a good time to enter just from Nifty, because अब क्या हो सकता है, market can go up and then after some time, after a few months again it will come back to its long term support and the trend continues. So that is what हम कह सकते हैं from Nifty 50. एंड सिमिलरली आप मल्टीपल सेक्टर्स देख सकते हो, ऑल द सेक्टर्स, नॉट इन मच सेक्टर्स आर लुकिंग गुड फॉर एंट्री एट द मोमेंट। आप देख सकते हो निफ्टी एनर्जी इज ऑल्सो अप, निफ्टी बैंक सेम सिचुएशन, निफ्टी एफएमसीजी ऑल्सो। क्या हो रहा है, इट हैज ऑलरेडी गॉन अवे फ्रॉम द सपोर्ट एंड नॉट एनी index is giving an opportunity, but one index that looks still good to enter is the Nifty IT. तो इसके बारे में हम प्रीवियस भी बात कर चुके हैं। आप देख सकते हो निफ्टी IT हैज क्रैश्ड बाय अराउंड 30% विच इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, एंड अभी ये स्लोली रिकवर हुआ है। सो नाउ इफ यू आर टू एंटर देन यू हैव टू लुक फॉर एंटरिंग इन ओनली IT कंपनीज। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी IT फॉर अ मिनट। आप देख सकते हो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ निफ्टी IT फ्रॉम 2006, एंड एक चीज कॉमन है कि इसका प्राइस एक्शन ऐसा है कि for almost every 2 to 3 years it gives a dip of 30 to 40%, right? So आप देख सकते हो starting from the year 2007 after the crisis Nifty IT fell by almost 65%, and then the next time it gave a dip was around in 2012. आप देख सकते हो from the top it had given a dip of around 33% and then it recovered, and after that in 2015 to 2017 again another dip where it gave another 30%. Recently during the corona crisis आप देख सकते हो it has given a dip of 35%, and now after the current market you can see that it has given a dip of around 33%. So again this is a very good opportunity. So this is what is called as price action, right? So इसका सेक्टर का कैरेक्टर है कि it always gives a good dip and then for 2-3 years it goes up. So this might be a very good time to enter IT in the coming months. There might be a very good move, and if you don't enter now then you might miss out on the moves. The first stock that looks good is Vipro. तो आप देख सकते हो Vipro has come back to its long term support which is the 200 moving average, and as of now it is down from its all time high by around 45%, right? So this is the perfect time to enter Vipro. तो बहुत लोग क्या करते हैं, they enter here, but when it's actually the dip, this is where you have to look for opportunities, क्योंकि जब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो your risk is very less, right? How further can the stock fall? This is a good company, the fundamentals are good, and it belongs to the most active sector which is the IT sector. So in the coming months and years this stock will recover, and this is the first stock that looks good. Second stock that looks good is Tech Mahindra. आप देख सकते हो similar story है। So अगर आप all IT कंपनीज देखते हो एवरीथिंग लुक सिमिलर, कुछ कंपनीज कुछ ज़्यादा मूव रिकवर किया है एंड सम कंपनीज आर स्टिल ट्राइंग टू रिकवर। सो टेक महिंद्रा इज द सेकंड कंपनी, एंड इसका भी प्राइस एक्शन ऐसा ही है। आप देख सकते हो फ्रॉम द ईयर 2007, राइट? एवरी once in 2-3 years it gives a good dip. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 87%, दैट वॉज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड देन अगेन इन 2009 it lost like 50%, and again in 2015 it lost 50% of its value, and even in the corona crisis it lost around 45%, and right now in the current market आप देख सकते हो it has lost around 48%. So this is a very good entry opportunity, and if you are entering here आप क्या कर सकते हो, you can hold it minimum until it hits the all time high. So आपका minimum target हो गया around 70%, which is a great target. So these are the two stocks that looks interesting. आप कौन से stocks observe कर रहे हो? Let me know in the comment section, and I'll see you in my next video.